So hello guys, today our topic is concept of utility. So what is utility? Utility is that power of any goods and services that satisfy our wants, and its unit is called utils, which is given by Professor Fisher, right? And what are the features of utility? Utility is subjective, not an objective concept, as it differs from person to person, right? And it is a relative concept. Utility is relative concept, means it can change with the time. It changes with time to time, with place to place, and according to the situations also. And third feature of the utility is not necessarily beneficial. A good may give satisfaction but may not be good for health. A product can give you satisfaction, right? But it is not beneficial for your health, just like cigarettes, right? Next feature of utility is it is independent of morality, so it doesn't consider whether the good is morally right or wrong. Next is cardial measurement of utility is possible, as it can be countable, it can be measured in terms of utils. So let's see, if the question arises that what is the concept of the utility. There are the two concepts of utility, that is first is total utility, that is TU, and second is marginal utility, that is MU. Take the example of आइस क्रीम. अगर हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, 1 unit of ice cream we consume, so our marginal utility will be 50 utils, right? And if we consume the 2 units of ice cream, then it will decrease up to it will decrease and come to 40, राइट? 10 यूटिल्स कम हो गई हमारी यहाँ पे. लेकिन जो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ द marginal utility. So 50 plus 40 is 90. Another, if we consume the third unit of ice cream, then our marginal utility will go diminishing, right? It will come from 40 to 30, but the total utility is similarly the summation of the all the marginal utilities, that is 50 plus 40 plus 30, and it will come to 120. Okay. Next, if we consume next unit of the ice cream, that is the fourth unit of ice cream, that marginal utility of consuming the extra unit in the next unit, then the marginal utility will be diminishing and total utility will be rising, as 50 plus 4, 90 plus 20, then 140. So total utility is 140 of the fourth unit of ice cream, as it is the summation of 50 plus 40 plus 30 plus 120. So if we consume the fifth unit of ice cream, that is the marginal utility will go on diminishing to 10 utils, and the total utility will come up to 150. Similarly, if I consume the sixth unit of ice cream, then no utils will be gained by me, and marginal utility will become 0, and the total utility is 150 plus 0 is similar as to 150. Okay. Now this is the point of saturation, where I do not कंज्यूम एनी यूटिल्स, राइट? मुझे कोई भी यूटिल्स यहाँ पे नहीं मिले, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0, एंड मेरी टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, मैक्सिमम 150 पे पहुंच चुकी है. अगर मैं इससे ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, देन आई विल गो on diminishing sides of marginal utility, right? marginal utility क्या हो जाएगी मेरी? 0, सॉरी, नेगेटिव में चली जाएगी. 0 तो हमारी 6 यूनिट पे ही कंज्यूम हो गई थी, लेकिन अब अगर मैं कंज्यूम करूँगी आइसक्रीम को, तो मेरी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो इसीलिए अगर मैंने कंज्यूम की तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? 150 प्लस माइनस 10 इज़ 140. ओके. टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी. मीन्स अगर
मैं मार्जिन यूटिलिटी मैं आइसक्रीम कंज्यूम करती जा रही हूँ, मार्जिन यूटिलिटी मेरी पॉजिटिव में है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। ओके, अगर मार्जिन यूटिलिटी मेरी ज़ीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी मेरी मीन्स टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं और भी कंज्यूम करूँगी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग में आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो द रिलेशनशिप जो हम आगे कवर करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव रहती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग हो जाती है। ओके, राइट। सो टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, राइट। हमने कमोडिटी का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हमने जब कंज्यूम किया तो उसका समेशन जब आया, that is total utility. Total utility n is equal to summation of mu. एग्जाम्पल, टोटल यूटिलिटी हम 2 का निकालते हैं तो 1 में हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी थी 50 और 2 में हमारी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी 40। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स का अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का mu1 प्लस mu2 का ऐड कर देंगे, दैट इज समीशन ऑफ mu। जितनी भी हमने निकालनी है हमने कंज्यूम कर लिया है, तो उसका समीशन कितना आ जाएगा 90। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, राइट। सो mun इज इक्वल टू tun माइनस tun-1। ओके, mu4 निकालना है जैसे हमें, तो हम यहाँ पे n क्या है 4, n-1 क्या है 3, तो mu4 इज इक्वल टू tu4 माइनस tu3। तो mu4 इज इक्वल टू tu4 क्या था 40 और tu3 क्या था 120, राइट। 140 माइनस 120 इज इक्वल टू 20। ओके, डन।